नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम रॉबिंदर सचदेव है। वेलकम ये कोविड केयर टाउन हॉल, जिसमें हम प्रश्न लेंगे बच्चों को लेकर के, कोविड को लेकर के। हमारे साथ बहुत ही एमिनेंट पैनल जुड़े हैं अमेरिका से, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ इंडिया से भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, और अच्छा पैनल है एजुकेटर्स का, टीचर्स का इत्यादि। हम सब आपस में डिस्कस करेंगे। ये प्रोग्राम करीब 1.25 घंटे चलेगा। जो भी ये देख रहे हैं, प्लीज इस पे लाइक तो आप कीजिए, पर अपने प्रश्न लिखते रहिए, और हम आपके प्रश्न जो नीचे कमेंट्स बॉक्स है उस पे लेंगे। सो वेलकम टू द ट्रैवलिंग टाउन हॉल नंबर 4। ये चौथा टाउन हॉल है हमारा उत्तराखंड में, जो हम कर रहे हैं, वेयर वी एड्रेस इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑन कोविड रिलेटेड क्वेश्चंस। अब बिना इंतजार किए मैं वेलकम करता हूं स्टूडियो में अपने साथ मेरी कोलीग कल्पना पांडे। Thank you, Kalpana, for joining so much. My pleasure to have you. मैं ऐड करता हूँ मिस्टर मनकोटी जी को, जो औषधि व्यवसाय मंडल के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। नमस्कार मनकोटी जी, वेलकम। मिस्टर मनकोटी इज द प्रेसिडेंट ऑफ द उत्तराखंड Chemists Association and also very active in Indian Red Cross and multiple things like that. मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर समर मेहता को, जो कि बॉस्टन से डॉक्टर हैं। Welcome, Dr. Summer from Boston, for joining us. I now join and add to the stream Dr. Anil Pandey, who's again a child specialist, a senior pediatrician. नमस्कार डॉक्टर पांडे जी। डॉक्टर पांडे एक सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं। Now it is my pleasure to welcome Dr. Sharon Vipula. Dr. Sharon Vipula is again a doctor, a child specialist, and she will be sharing her views. So welcome करते हैं डॉक्टर शैरन को, जो अमेरिका से चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। आपके जो प्रश्न हो बच्चों को लेकर के अभी हम शुरू करेंगे, we will take them. अब मैं last but not the least, I welcome डॉक्टर श्वेता। डॉक्टर श्वेता again चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं अमेरिका से। May I now invite Kalpana Pandey, my colleague, to begin the few quick openings, and then we start rolling. अब कल्पना जी अपने ओपनिंग रिमार्क्स देंगी, उसके बाद आगे प्रोग्राम चलेगा, प्लीज। थैंक यू रविंदर। सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ सारे डॉक्टर्स जो यूएस से इतना अपना समय निकाल के हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, और लोग बहुत उत्सुक हैं आपके प्रश्न पूछने में। मेरे पास एक पूरी लिस्ट आई है कि लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, खासकर अपने बच्चों से रिलेटेड। उन्हें डर है, कुछ एंजाइटीज हैं। और इसके अलावा मैं डॉक्टर नलिन पांडे जी का वेलकम करती हूँ, जो अल्मोड़ा से हैं, और इतने छोटे से हमने एकदम अभी बोला उनसे कि आप ज्वाइन कर लीजिए, तो वो सहायता करेंगे ये अमेरिका के डॉक्टर्स को, अगर आपको कुछ समझ ना आया, उनका हिंदी ट्रांसलेशन प्लस उनके अपने व्यूज। और मैं आभारी हूँ मिस्टर मनकोटी जी का, जो तो विशेष आभारी हूँ, क्योंकि उनके बिना ये हमारे 2-3 टाउन हॉल्स हो नहीं पाते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन आई एम रियली थैंकफुल टू रविंदर सचदेव जी। उन्होंने आपको इंट्रोडक्शन कराया। रविंदर जी एक बहुत जानी मानी पर्सनैलिटी हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, इनको आपने टीवी में बहुत देखा होगा, और इमेज इंडिया के ये प्रेसिडेंट हैं। और मैं और रविंदर जी, हम लोग पुराने साथी हैं स्कूल के, और रविंदर की वजह से ही हम ये प्रोग्राम्स कर पाए, और भी करेंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ रॉबिन का, एंड आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। थैंक यू। Thank you so much, Kalpana. May I now invite Mr. B.S. Mankoti to say a word of welcome to our American doctors. मैं मनकोटी जी को आमंत्रित करता हूँ अपने अमेरिकन डॉक्टर्स को अभिनंदन करने का। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज मनकोटी साहब। हाँ, आई एम ऑडिबल? Yeah. Thank you, Rominder ji. First of all, I would like to welcome the wonderful panel of American Indian doctors. Thank you very much again for your very precious time and knowledge sharing. Today, our main emphasis and stress is on the prevention and precautions for the expected third wave coming to India of COVID-19. मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स का, जो हमारे साथ जुड़ के इस प्रोग्राम को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और हमें आशा है इस प्रोग्राम से उनको काफ़ी नॉलेज
शेयरिंग मिलेगी जो वो आगे उसको बढ़ाएंगे. And of course, thank you very much, the host, Mr. Rovinder and Mrs. Kalpana Pandey. Thank you very much. Thank you, धन्यवाद मटकोटी साहब. Now मैं invite Dr. Nalin Pandey to say a few words to kick off and welcome the doctors. We'll come back to the discussion, but right now just a few welcome words, please. Hello, good evening. Thank you to everyone. Ravinder Saab, आप लोगों को भी. It was a short time just now, after just hours back, Mr. Mankoti told me to join the program. I welcome everyone from the US. Thank you for joining. And whatever help I will be able to do it, I'll help you in explaining to the people who are asking questions. And you all are most welcome. Thank you. Thank you, Dr. Pandey, Dr. Nalin Pandey का बहुत बहुत धन्यवाद. Now we basically dive into the discussion, or firstly the opening comments from the doctors. We'll try to be efficient, in the time that we can. So it's a process of learning for us all also. Meanwhile, as we were talking, जैसे हम बातें कर रहे थे, meanwhile हमें काफी comments आने शुरू हो गए हैं. By the way, on the right hand side, if you'll see, we are getting comments. Thank you, William Arya. Saying Stevens Vupula. Okay, cool. Sania saying good evening. Thank you. Geeta Pandey saying good evening. Vipin Payal saying hello. Vandana Matkoti saying namaste. And thank you very much. So we are starting to get the comments. But मेरा request ये रहेगा, good and अच्छा तो अच्छी बात है, आप अपने targeted questions दीजिए, फायदा उठाइए. So what I'm saying to the audience is that, hi, hellos and goods is thumbs up is good, but more productive would be your questions. But let's come back now to the opening comments. May I first of all invite Dr. Samar Mehta for his opening comments on the topic of the day, COVID and children. So Dr. Samar, what are your one or two key giveaways you would want to give the audience? What should they do or not do or not think regards COVID and children? Dr. Samar Mehta, please. Thank you, Ravinder ji, Kalpana ji, Mr. Mankoti, Dr. Pandey, all of you. Thank you very much. I won't take very much time. I do see. I'm an infectious disease and emergency medicine doctor. So one thing that I think the two takeaway points are: first, thankfully, thank God, for most of the COVID pandemic, children have not been very severely affected. Of course, there's some exceptions, but overall, children have done well. So the first message is be aware that usually children do well. Of course, when a child does get sick, it's very, very tragic. But we should at least be aware that they usually do well. Secondly, that I would just like to say is, even though overall younger children don't tend to have such strong disease, they can transmit and they can spread the infection, especially since right now they're not being vaccinated. So I think a lot of the questions that we'll have from Dr. Sharon and Dr. Sweta will emphasize what can happen in worst case in kids, but also how to think about how to prevent infection from spreading within families. So they are really the experts. I'm just here to listen and offer some additional comments. And Dr. Pandey, obviously also, who's the one on the ground seeing children in India. So I just really appreciate all three of them being here, and I would like to help and support in any way possible, because I think this is really important as we think about going for third wave. Thank you so much, Dr. Samar. Dr. Samar कह रहे हैं कि इनकी जो स्पेशलिटी है वैसे ओवरऑल और एरो में है, बट ये इमरजेंसी रूम में खासकर डील करते हैं. तो इमरजेंसी केसेस जो बच्चों के आते हैं वो उसको हैंडल करते हैं. तो ये कह रहे हैं कि बाकी तो डॉक्टर शारन, डॉक्टर श्वेता डिटेल में बताएंगी, बट इनका ये है कि बच्चों पे जो अगर कोविड आएगा तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी इम्यूनिटी लो है, बट एट द सेम टाइम वो कैरियर्स भी बन सकते हैं शायद कोविड के. सो इन शब्दों के साथ वो सबको धन्यवाद करते हैं, हमारे पैनल होस्टिंग को और अपने ऑडियंसेस को. देखिए प्लीज अपने क्वेश्चंस आने दीजिए. आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ कमेंट्स. I'm incoming in yes now. So there's someone saying great Kalpana, thank you. Anil Bhatia saying hello everyone. Classmate. Somebody is saying I'm from Uttarkashi. Dhanyawad. Okay, here is the question we got. Sir, my first question to you will be that we'll come to the questions in a minute, Vipin. First we want to take opening comments. So I'm just kind of sharing कि ये comments आ रहे हैं, please comments आते रहने दीजिए. Now may I invite Dr. let's say Shweta for your opening thoughts and comments. Any 1-2 giveaways you want to give, and if you can speak in Hindi, excellent. मैं डॉक्टर श्वेता को वेलकम कर रहा हूँ. अब ये अमेरिका में डॉक्टर हैं,
ये शायद कुछ हिंदी में बोल सकती हैं, तो मेरा अर्ज है अगर हिंदी में बोलेंगी अपने ओपनिंग शब्द विल बी ऑसम. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ डॉक्टर. नमस्कार. मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, पर कोशिश करूंगी कि सही वर्ड्स यूज करके बात करूं. मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया इन सब से बात करने के लिए और ये पैनल में पार्टिसिपेट करने के लिए. मैं चिल्ड्रंस आईसीयू में काम करती हूँ. यहाँ चिल्ड्रंस, जैसे डॉक्टर मेहता कह रहे थे, समर मेहता कह रहे थे, यहाँ चिल्ड्रंस में कोविड ज़्यादा नहीं हुआ है, पर जिनको भी हुआ है मैंने उनका ख्याल रखा है आईसीयू के अंदर. ज़्यादा से ज़्यादा हमने देखा है कोविड का डायरेक्ट इन्फेक्शन उनको जितना अफेक्ट नहीं करता है, कोविड के बाद उनको पता भी नहीं चलता है कि उनको कोविड इन्फेक्शन है, पर कोविड के बाद एक डिजीज़ है मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिस्टमैटिक कंडीशन कह के, वो ज़्यादा अफेक्ट करता है. और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा उन पेशेंट्स की ट्रीटमेंट किया है. डायरेक्ट कोविड निमोनिया और कोविड इन्फेक्शन से ज़्यादा जो सेकेंडरी सेकेंडरी रिएक्शन होता है कोविड की वजह से, बॉडी में एंटीबॉडीज अपने खुद के बॉडी को अटैक करते हैं, उसका मैंने ज़्यादा प्रेवलेंस देखा है. थैंक यू सो मच डॉक्टर श्वेता. सो इसको मुझे कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है. आई थिंक जो उन्होंने मैसेज दिया सिंपल दिया, हमारी ऑडियंस इसको गया है. आप अपने प्रश्न आपने रखने शुरू कीजिए, अभी प्रश्नों का दौर शुरू होगा. नाउ मैं इनवाइट डॉक्टर शैरन फॉर योर ओपनिंग थॉट्स एंड कमेंट्स. अब मैं डॉक्टर शैरन को इनवाइट करता हूं उनके ओपनिंग शब्दों के लिए, प्लीज. Could I have the question translated, please? There is no question right now. These are your opening thoughts, and you can give any one to big idea what you're seeing, any advice you want to give, any opening thoughts right now. Yes. So again, I'm Dr. Sharon Vupala. I'm board certified in pediatrics and pediatric infectious disease. My experience here in the United States has been more with managing newborns who are born to mothers with COVID-19. So I hope that that's a talking point because that's an important issue to cover. I think this is a very timely topic to discuss, as we know that as adults, more adults get vaccinated, and we will and should be prepared to see more children being affected with COVID. Awesome. Thank you very much. And if I have understood you correctly, I'm trying to translate. Dr. Sharon ये कह रही है इनका experience ज़्यादा है mothers जिनको COVID है, mothers who had COVID and have had babies, right, Sharon? Doctor? Yes. Yeah, great. तो डॉक्टर शैरन का ज्यादा एक्सपीरियंस है जिन माओं को कोविड है और उनके बच्चे हुए हैं, तो उनकी देखभाल और ट्रीटमेंट सारे का. आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. कोविड, माँ को कोविड, बच्चे को, और नया बच्चा भी हो और ना भी हो तो कैसे प्रिकॉशन इत्यादि. थैंक यू सो मच डॉक्टर शैरन फॉर योर sharing your thoughts. Now meanwhile we've had even more questions coming in. I'm sorry, I'll try to take comments from people, but we have a bunch of things coming. Adi Notial says, good evening, thank you. Sushil Dimri is saying, we are not going to answer this right now, I'm just reading it out aloud. My question है क्या 5 साल से छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक दे सकते हैं? Can we give antibiotic to children less than the age 5? Can someone quickly answer this? Can you give antibiotics to children who are younger than 5 years of age? Dr. Sharon or Dr. Shweta? Okay, please. Yes. So is the question specifically to can you give antibiotics for children with COVID, or in general, can you give antibiotics? In general, yes. So as I'm sure Dr. Pandey will agree with me, antibiotics can be used even in the newborn period. So even in the first 1 month of life to treat serious infections. Now with COVID specifically, both in adults and children, we have not seen secondary bacterial infections as we do with influenza and other viral infections. So it's really not really a priority to necessarily start antibiotics. Of course, if a child is sick enough, and Dr. Shweta will attest to this, it's very reasonable to start antibiotics, but antibiotics are not the mainstay of treatment of COVID infections. Thank you so much. I think, Dr. Sharon, if I may please, I think the question was limited right now, under age 5, antibiotics can be given or not. Your answer is can be given, right? Even a month. Yes, it can. It can be given from birth on. Yes. Thank you. So Sushil, Robin, I want to add some more thing, because there's a lady who's asked a similar question. So you can add, she can answer this also.
and then you can, translate in Hindi. She says, again, her name is Sharon Mehta also. She says, how could we make a baby's immunity strong and efficient? How can we make our baby's immunity strong and efficient? She's talking of newborn babies whose mother are infected with COVID. Yeah, that's a great question and something I'm very passionate about. So breast milk is the way we boost the immune systems of our newborn. I actually call breast milk the first vaccination. I know in India, the first vaccination, that's actually the BCG vaccine, but in the United States, where we don't vaccinate newborns like right after birth, other than the hepatitis B vaccine, I really strongly recommend that mothers breastfeed their children. But if you've had a past COVID infection, those antibody studies have shown have been transmitted through the breast milk in a significant number in terms of the value. In addition to that, even getting vaccinated if you're pregnant is beneficial. And again, that can be passed on through milk. So that is the main way which we can boost the immunity of our newborns and also offer protection against COVID. थैंक यू डॉक्टर शारन. अगर मैं इसको मैं पूरा तो ट्रांसलेट नहीं, बट आई थिंक एक मेन जो चीज इन्होंने कही विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मदर्स का जो ब्रेस्ट मिल्क है सबसे अच्छी चीज वो है नए बच्चों के लिए. आई थिंक वो एक मेन चीज है. उसके अलावा डॉक्टर पांडे, कैन यू प्लीज help us convey what Dr. Sharon said, because that's the big picture I gathered was one that if you can quickly and add your thought also to that, sir. हाँ, डॉक्टर शरण ने बताया कि बच्चों को पैदा होते ही माँ का दूध देना चाहिए. यही सबसे बड़ी इम्यूनिटी बूस्टर होता है. जो इम्यूनिटी बढ़ती है बच्चों के लिए माँ का दूध ही सबसे जरूरी होता है. ये पूरे विश्व में है कि बच्चों को पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है और उसके अलावा कुछ नहीं है. बाकी तो वैक्सीनेशन जो टीके वगैरह लगते हैं बच्चों को समय समय जैसा जिस जगह जहाँ सा प्रोटोकॉल होता है उस हिसाब से टीके लगते हैं, पैदा होते लगते हैं, उसके बाद 1.5 महीने 2.5 महीने 3.5 महीने जिस तरीके से हर कंट्रीज में अपना प्रोटोकॉल होता है उस हिसाब से उसको दे. लेकिन जो क्वेश्चन था कि इम्यूनिटी बूस्टर न्यूबॉर्न्स के लिए क्या है, वो डॉक्टर शरण ने क्लियरली अच्छी तरीके से बता दिया है कि मदर्स मिल्क जो है माँ का दूध, पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध पिलाएं. थैंक यू. Thank you so much, Dr. Pandey. बहुत धन्यवाद आपका. Now we move on. We are still in the opening rounds. We have not even gotten to the questions. Okay. We just picked up a few in between. अब may I invite now Mr. Mankoti. आपके कुछ ओपनिंग प्रश्न हो और उसके बाद फिर डॉक्टर पांडे से. So मनकोटी जी, आपके कुछ प्रश्न प्लीज अगर हैं तो. Okay. If you can ask in English, that'd be great. Yeah, I'll ask. Actually, this question has come from some of our viewer, Ved Prakash. He says, will COVID show same symptoms on children as it showed on adults, or there will be certain variations? Do you understand me? Yeah. So, sorry. Dr. Sharon or Shweta, who amongst you would take this, please? कि कोविड वही सिम्टम शो करेगा बच्चों में जो अडल्ट में शो करता है, या ये अलग होगा? सवाल ये है. Just to be sure I understand, Mr. Mankoti, that because is the difference in symptoms between adults and children. Yeah. Yes. The new wave is expected actually. So the question is for that only from the viewer, Mr. Ved Prakash, I think. मैं आंसर कर सकती हूँ. जनरली जो भी वायरल इन्फेक्शंस होंगे उनका सिम्टम्स सिमिलर ही होगा. अडल्ट होंगे या पीडियाट्रिक पेशेंट्स होंगे, शुरू तो वैसे ही होंगे. कॉफ या कोल्ड या बहता हुआ नाक या फीवर के साथ. अब जैसे प्रोग्रेस होगा, अडल्ट्स में अलग तरीके से प्रोग्रेस होता है. उनको कोविड निमोनिया जल्दी हो जाता है और अडल्ट्स को बाकी कोमोर्बिडिटीज जैसे उनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज और अलग तरीके के डिजीजेस ऑलरेडी होते हैं तो उनका बॉडी ज़्यादा अफेक्ट होता है. पर पीडियाट्रिक्स में हम इतना कोविड निमोनिया नहीं देखते हैं क्योंकि उनकी कोमोर्बिडिटीज कम है. वो कह के ये नहीं कहना है कि नहीं कभी नहीं होता है, पर ज़रूर कोविड निमोनिया पीडियाट्रिक्स में भी होता है. और जो
कोर्स जो लेता है जब पीडियाट्रिक्स में होता है अडल्ट्स की तरह सिमिलर ही होता है. Okay. Again, I sorry, just to add, and I'm not completely. I didn't understand everything Dr. Swetha said, but I just want to point out that gastrointestinal symptoms can be more prominent in children, especially those who go on to have the multi-system inflammatory condition. So that's an important thing to add. And I don't know if Dr. Shweta mentioned this, but the majority of children will have very mild symptoms or asymptomatic. So only a very small subset of children will need hospitalization or ICU management. If I could understand you, Dr. Sharon, to easily translate it, you mean to say for children, it's the stomach upset problems which would be more? Well, the first thing to point out. Gastrointestinal or Shweta, yeah. Sorry, I think what she's trying to say is not the direct COVID infection, but the secondary antibody reaction when you have Miss-C, gastrointestinal symptoms are high. Shweta ji, if you can please in Hindi, it will save me translating. It will go quicker to the audience. If you can, yeah. So I'll just say the same thing in Hindi again, Sharon. Sorry about that. So जो डॉक्टर रूपला कहना चाहती है कि कोविड का डायरेक्ट इन्फेक्शन नहीं, पीडियाट्रिक्स में हम ज़्यादा ये देखते हैं मल्टी सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कह के देखते हैं, जो कोविड के इमीडिएटली नहीं होता है, कोविड के 3 या 4 हफ्ते बाद आता है. वो इसलिए आता है कि कोविड इन्फेक्शन को फाइट करते करते बॉडी के एंटीबॉडीज अपने खुद के बॉडी के ऑर्गन्स को अटैक करते हैं. तब जीआई सिम्टम्स मतलब स्टमक के सिम्टम्स, वॉमिटिंग, डायरिया, ब्लडी डायरिया, वो ज़्यादा देखते हैं हम. पर कोविड का डायरेक्ट इन्फेक्शन से जीआई सिम्टम्स नहीं देखते. But we have a registry about over 1,000 kids through our CDC database here in the United States, and the most common symptoms in children were fever and cough. So to kind of keep a lookout for those. Great. Thank you very much. Dr. Sharon कह रही है कि most common symptoms जो बच्चों में जो डॉक्टर श्वेता ने कहा उसी के साथ मिलाते हुए कि कफ एंड कोल्ड, खांसी और जुकाम होते हैं बच्चों में. थैंक यू सो मच डॉक्टर शैरन, डॉक्टर श्वेता. डॉक्टर मिस्टर मनकोटी, आपके पास कोई एक आध और प्रश्न है कोई? मिस्टर मनकोटी, so again a question to the same thing, like how much adverse will be the third COVID wave be as compared to the first and second wave? किन से आया है प्रश्न? ये कह रहे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि थर्ड वेव आए ही नहीं. Sure. ये प्रश्न किसने पूछा था मनकोटी साहब? Sure. I think compared to first and second wave से क्या ज़्यादा वो होगी या क्या होगा? Yes, so I can certainly speak to that. So that really depends on a number of things. Right now, what's going on in the United States was in the start of the pandemic, pediatric cases of COVID consisted about 3 to 5%. And then when we had our second wave, that increased to about 10. And now a quarter of our total COVID-19 cases are pediatrics. So we can anticipate a similar trend in India, but it largely has to do with the vaccination rate in the adult population. In the United States, our vaccination rate is nearing 60%. And it varies from state to state, but it really depends on how much of the adult population will be vaccinated. So if in this first wave, the majority of the adults are vaccinated, yes, it could begin to affect the children more as it is happening in the United States. Having said that, the reassuring... Dr. Sharon, may I slice this translate before you go on? The one essence? Yes. Dr. Sharon का एक मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण कहना है amongst other things कि अमेरिका में कोविड में इन्होंने देखा है कि जो पहली वेव आई उसमें से 3 से 5% जो पेशेंट थे वो बच्चे थे. जो दूसरी वेव आई उसमें करीब 10% बच्चे थे. और अब जो ये वेव आ रही है इसमें अमेरिका में इनको ये दिख रहा है कि करीब 25% लोग बच्चे होंगे, राइट? 3%, 3 to 5 in the first wave, 10% in the second, and now 25% towards the trend. Sharon, right? Yes. तो ये डॉक्टर शैरन का एक महत्वपूर्ण कहना है. प्लीज कंटिन्यू डॉक्टर शैरन.
Yes, so in addition to that, also I don't know what the plan is for school closure is and limiting children's activities here in the United States. In the second wave, there was again a restriction in schools. Schools have just reopened, a restriction in the way children play sports, socialize, things like that. So it really will depend on, number one, the vaccination rate in the adults, and number two, the restrictions placed on children, I believe. थैंक यू सो मच डॉक्टर शेरन। और मीनवाइल मैं ऑल्सो वेलकम करता हूं स्टूडियो में अपने साथ हमारे सहयोगी माधव जोशी जी को, जो कि उत्तरकाशी से हैं। नमस्कार माधव जी, वेलकम। नाउ मे आई कम टू, देयर इज वन क्वेश्चन, Robin, can I ask just one question from Neha Rawat? Okay. Please, sorry. Can excessive steaming and use of zinc cause side effects in children? Yeah, so this is a question I get a lot from my Indian relatives, and so first of all, in a country like India, where several children do have zinc, iron, vitamin A deficiencies, I don't necessarily think there's a harm in using zinc. We know that it's beneficial in treating respiratory infections and diarrheal diseases, but so there's really no. Of course, there's a toxicity for any vitamin, so in the right amount, it could be given in discussion with the pediatrician. In terms of steam inhalation, again, zinc, steam inhalation, the use of vitamin D, all of these things have not proven to prevent COVID-19. So it's reasonable to do it if that makes a parent feel better about things. But scientifically, there's really no benefit of these things in prevention of COVID. थैंक यू डॉक्टर शेरन। डॉक्टर शेरन का आंसर, जो किसी का प्रश्न था कि एक्सेसिव स्टीमिंग और जिंक ज्यादा लिया जाए तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, डॉक्टर शेरन का कहना है कि अमेरिका में और शायद दुनिया में कोई इसका डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है स्टीमिंग का और जिंक का कोविड के अगेंस्ट, बट अगर लेना चाहें तो लीजिए, पर अप्रोप्रिएट मात्रा में, और बाकी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, पर इनके लेने का कोई फायदा नहीं है रिसर्च के हिसाब से, पर लेना चाहें तो लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स कल्पना। नाउ मे आई मूव टू डॉक्टर अनिल पांडे। अब मैं डॉक्टर अनिल पांडे जी को इनवाइट करूंगा। डॉक्टर पांडे, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस विद चिल्ड्रन इन इंडिया, एंड व्हाट आर यू सीइंग हियर with these doctor colleagues, and share something, what are the trends you're seeing in India? Like if the question was कि early infections, early symptoms क्या हैं बच्चों को कोविड के, अगर आपके पास आपको कुछ दिख रहे हो, और अमेरिका में कैसे दिख रहे हैं, और समथिंग, एनीथिंग, इट्स ओपन सर, प्लीज। जैसे डॉक्टर शरण, डॉक्टर श्वेता ने बताया, अभी भी बच्चों को भी खांसी, जुकाम और फीवर इससे ही शुरू होता है, और बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को एसिम्प्टोमेटिक, उसके लक्षण कम होते हैं। ज्यादातर बच्चों में बहुत लक्षण कम रहते हैं, एसिम्प्टोमेटिक भी रहते हैं, लक्षण होते भी नहीं है। पेरेंट फैमिली को हो जाता है, बच्चों को नहीं होता। बॉल्ड माइट सा होता है, 2-3 दिन में बच्चे ठीक हो जाते हैं, डॉक्टर को विजिट करते हैं। और कभी कभी जो मेरी अपनी वो है, कभी कभी बच्चों को जो है डायरिया भी इनमें होता है, डायरिया, कफ एंड कोल्ड टुगेदर। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, पैनिक की बात नहीं है। कम से कम इस वेव तक तो सब बच्चे सेफ हैं, सब बच्चों को कुछ नहीं, ज्यादातर बच्चे रिकवर कर जाते हैं, ठीक ठाक हो जाते हैं, और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पांडे का। डॉक्टर पांडे was giving a message to the audiences that घबराने, not to worry much. Some of the symptoms which you already explained, early symptoms like cough and stomach, etc. Before we move on, and Kalpana, maybe in a minute you may pick up another question from the question bank. I'll come to that in a minute. But may I ask Dr. Shweta? Dr. Shweta, you were reading the comments on the sidelines, right? And you were seeing certain comments of which you could give an answer. So maybe you could give, before that, a minute, let me talk to the Hindi perspective. अब डॉक्टर श्वेता ने, हमने काफी क्वेश्चंस जो आए हैं इम्यूनिटी को लेकर के, ओके, हमारे को जो अभी से पहले भी आए थे, जो मनकोटी जी, माधव जी, और डॉक्टर विद्या कर्नाटक और हमारे सारे सहयोगी ने इकट्ठे करे, वो हमारे पास लिस्ट भी है, बट अभी यहाँ भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इम्यूनिटी के लेके, तो डॉक्टर श्वेता उन कुछ प्रश्नों को आंसर करेंगी। डॉक्टर श्वेता, प्लीज। जरूर। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन देखा था, मैं
कहा किसने हाँ मिस्टर चिराग सिंह ने पूछा कि कोविड वैक्सीन अंडर 18 चिल्ड्रन को दे सकते हैं या नहीं दे सकते। यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में 12 से ऊपर चिल्ड्रन को अभी वैक्सीन अप्रूव हुआ है और वो दे रहे हैं, पर हमने ये भी देखा है कि कुछ बच्चों को उनमें से मायोकार्डाइटिस के हार्ट का इन्फ्लेमेशन डिजीज हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए 12 से ज़्यादा ऊपर एज चिल्ड्रन को यहाँ यूएस में दे रहे हैं, पर आई थिंक अभी तक इंडिया में वो अप्रूवल नहीं है। डॉक्टर पांडे जी मुझको कंफर्म कर सकते हैं कि ये सही है नहीं है, पर इंडिया में अभी 18 से छोटे बच्चों को नहीं दे रहे हैं वैक्सीन। Another question on this, Dr. Shweta, if you could. Covishield kitne? No, okay, not this one. Narendra Singh Panwar sahab, aapko question next round mein lenge abhi. But anything else on immunity? Kalpana, do you have any questions on immunity? And Dr. Shweta can answer, please. Madhav wants to ask a question. Madhav, अपने आप कुछ पूछना चाहते थे वो. माधव जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते थे, अनम्यूट कर लीजिए. आप कुछ पूछना चाहते थे, अनम्यूट कीजिए. माधव जी अनम्यूट. नमस्ते. अनम्यूट कर लो. ये मैंने आदेश नौटियाल का क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था कि स्टेरॉइड का प्रयोग बच्चों में किस हद तक सही है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं आगे, क्या डेंजर हो सकता है स्टेरॉइड का. Great, thank you. I think the question is clear cut. I can translate. Steroids usage in children, how far is it advised, and what could be the long-term impacts of, giving steroids to children? Please, Dr. Sharon, and please. That's a really great question. So a couple of things. In the early stages of COVID, steroids are really only indicated when there is a oxygen requirement, whether it's in the adult population. We don't really know the exact indication for corticosteroids in the treatment of COVID-19 other than the multi-system inflammatory syndrome that affects children. So in the initial stages of a viral infection, and I'm sure Dr. Pandey will agree with this, steroids oftentimes can suppress the immune system and worsen viral infections. So it's not really recommended. Now, if you have an asthmatic that begins to have Dr. Sharon, if we can split it, it'd be a little easier. Okay, so one part of your answer, who could help us convey back? Dr. Pandey, आप please help कर देंगे, क्योंकि मैं थोड़ा मिस कर गया था जो डॉक्टर शैरन कह रही थी. आपका भी सेम होगा, स्टेरॉइड फॉर चिल्ड्रन. हाँ, तो डॉक्टर शैरन ने ठीक कहा है, वही कहा है. मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों में स्टेरॉइड का प्रयोग वैसे किया नहीं जाता जैसे एडल्ट में किया जाता है. एडल्ट में तभी किया जाता है जब उसकी सिचुएशन बिगड़ने लगती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. और बच्चों में इम्यूनिटी जब तक ये तभी यूज होता है जब बच्चों में कुछ बीमारी आजकल बताई थी, मल्टी सिस्टम डिजीज सिंड्रोम है, वो जब होता है तब जाके उन बच्चों को दिया जा सकता है. अदरवाइज बच्चों में स्टेरॉइड देने का रोल है नहीं जनरली. Thank you. Thank you so much, Dr. Pandey. And Dr. Sharon, please continue. Yeah. Meanwhile, we welcome another guest to our studio, Dr. Vidya Karnataka. Dr. Vidya Karnataka deals extensively with the education system, school systems in the state of Uttarakhand. Welcome, Dr. Karnataka. Aapka bahut welcome hai, Dr. Vidya ji. Yes, Dr. Sharon, please continue. I'm sorry. Yeah. Yes, and I'm sure Dr. Swetha can speak to this point. So I don't want to leave it as there's no role for corticosteroids in the management of COVID-19 patients. Again, in multi-system inflammatory, the syndrome which affects children, there is a role for both IVIG and steroids for the treatment of that. And Dr. Swetha has, and the studies, according to at least pediatric critical care medicine. We could indulge in Hindi, please. Sorry, I apologize. It's just so easy. It's just, I'm sorry. It's just my. तो हमने देखा है आईसीयू में जो पीडियाट्रिक चिल्ड्रन को एडमिट करते हैं, जब वो ऑक्सीजन या ज़्यादा इंट्यूबेट करते हैं और उनको मैकेनिकल वेंटिलेशन देना पड़ता है, तब उनमें जैसे अडल्ट्स में डेक्सामेथासोन या स्टेरॉइड्स देते हैं,
ये देखा है रेमडेसिविर के साथ हम पीडियाट्रिक्स में भी स्टेरॉइड्स देते हैं, पर तब भी जब पीडियाट्रिक चिल्ड्रन इतने सिक होते हैं कि आईसीयू में एडमिट होके उनको ब्रीदिंग के लिए सपोर्ट एक्स्ट्रा देना पड़ता है। Thank you so much, Dr. Shweta. Now may I come to Dr. Vidya Karnatik. आपके पास कुछ प्रश्न होंगे, and please, I think if there's some echo, we can mute ourselves. Or okay, yeah, Dr. Vidya, आपके कोई प्रश्न? थैंक यू सर। कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो आए हुए हैं, उसमें से एक पहला क्वेश्चन मैं करूंगी। इन्होंने पूछा है, आकाश अग्निहोत्री जी ने पूछा है, Can you please read a bit louder थोड़ा, डॉक्टर विद्या? आपकी आवाज थोड़ी हल्की आ रही है, थोड़ा पास आ जाइए माइक के। थैंक यू। हाँ जी, हाँ। एक क्वेश्चन है आकाश अग्निहोत्री जी का, जो पूछना चाह रहे हैं, व्हाट वुड बी एन एप्रोप्रिएट डाइट, लाइक विच फ्रूट्स वी शुड चूज द इम्यूनिटी रिच ones only or seasonal ones? Great, thank you. I think it's clear. The question is that which could be the fruits and all which the children could use for boosting the immunity, right, Vidya ji? जी। हाँ, तो boosting immunity, fruits, veggies, what do you recommend? Seasonal or ones? Sure, Dr. Shweta. I think even though I don't do मैं general pediatrics practice नहीं करती हूँ बाहर, but general recommendation यही होगा कि हर fruit और हर vegetable खाना अच्छा है, और हर fruit और vegetable में nutrients और vitamins होते हैं जो body में उपयोग हो सकते हैं। वो कह के ये भी थोड़ा रिसर्च है जो देखा है कि विटामिन सी ज्यादा जिनमें होता है वो फ्रूट्स अच्छे होते हैं इम्यूनिटी के लिए, जैसे जिंक और वो सब पड़े हुए हैं। तो ऑरेंजेस, जो भी विटामिन सी हाई है वो फ्रूट्स अच्छे हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच Dr. Shweta. May I request Dr. Vidya or all of us to mute our mics if one is not speaking. There's an echo otherwise. Thank you. Kalpana, would you have some questions? Kalpana ji, आपके पास प्रश्न थे? Yeah. I have a question. One is a very cute question, but again I'm going to ask that question from Anubha Kandpa. She says, "My child is 1 year old and she refuses to wear a mask. Kindly suggest." And the second one also, she says, "What precautions can we take?" This is from Anjana Pandey. "What precautions can we take at home to prevent children from the third COVID wave?" Before we get the answers, Kalpana, can you say the same question in Hindi so that our folks know what question is being discussed? बिल्कुल। उन्होंने इनकी किरण, क्या नाम है इनका, अनुभा कांडपाल जी की 1 साल की बच्ची है जो मास्क नहीं पहन सकती, बिल्कुल भी नहीं पहनती। वो कहते आप सजेस्ट करिए क्या करें। दूसरा एक ये है कि अंजना पांडे जी ने पूछा है कि जो तीसरी वेव आएगी उससे हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं। So, doctors, please, the 1-year-old child who refuses to wear the mask, and the second question, Kalpana, what was the second question? Second is about how do we protect our children from the third wave? What precautions should we take? I can answer the first one. I have a 3-year-old, a 2-year-old who just turned 3-year-old, and I went through. मेरी बच्ची अभी 2 साल से अभी 3 साल की बनी है। तो जब कोविड शुरू हुआ था तब भी 2 साल की बनी हुई थी, और यहाँ रूल था 2 साल के सारे सब 2 साल से ज्यादा एज जो बच्चे सबको मास्क पहनना है। तो ये डिफिकल्ट है क्योंकि बच्चों के बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 1 साल बच्चे को मास्क पहनाना बहुत मुश्किल है। वो रखेंगे नहीं और वो समझेंगे भी नहीं। पर जब मैं अपनी 2 साल की बच्ची के साथ प्रैक्टिस करा रही थी, मैं उसको एक गेम की तरह बता के, जब वो समझ सकते हैं, 2 साल से ज्यादा एज में थोड़ी समझ सकते हैं, एक गेम की तरह बना के कि कौन ज्यादा देर मास्क रख सकता है, कितनी देर मास्क रख सकते हैं हम, या कुछ उनको वीडियो कार्टून्स देखना पसंद है तो ये कार्टून खत्म होने तक 10 मिनट तक मास्क रखो, वैसे करके मैंने ट्रेन किया था।
Great point. Interesting. Thank you. Yeah, Sharon, please. Yeah, doctor. Unmute. Yeah. Yeah, I just want to add that in terms of getting the 1-year-old to wear a mask, it's not recommended. I don't know if Swetha mentioned this. So yes, she mentioned it. Less than 2 years of age, it's not recommended. ग्रेट थैंक यू डॉक्टर श्वेता ने तो बताया अपने एक्सपीरियंस कि अपने 2 साल से ऊपर के बच्चे को, क्योंकि अमेरिका में रूल था कि 2 साल से ऊपर के बच्चे को मास्क पहनाना होता है, तो उन्होंने अपने बच्चे के साथ किस तरह खेल बना करके उसे धीरे धीरे ट्रेन कर रही हैं। बट डॉक्टर शेरन ये रिमाइंड कर रही हैं डॉक्टर श्वेता के साथ कि 2 साल से कम की उम्र में रिकमेंडेड नहीं है मास्क पहनाना, तो शायद जो पूछ रही थी प्रश्न, उनको इतना इस पे टेंशन नहीं लेना चाहिए शायद। ठीक है। एंड सेकंड नाउ डॉक्टर्स ऑफ प्रिकॉशंस, what can be the precautions? Yeah, please. I can go on. Okay, yes. So the vaccination is our way out of this pandemic, whether it's the United States or India. So I want to stress that the onus of vaccination is on the adults, and not the children, because children are not the epicenters of this pandemic. Thank you. Sorry. Thank you so much. If someone can, yeah, Dr. Shweta, if you can please. Yeah. Okay. In addition to the adults being vaccinated, once the vaccine is available for the young adults and the teenagers, it's important to have them vaccinated. So that will be another layer of protection to our youngest vulnerable pediatric population. In addition to that, social distancing, unfortunately, is very key for children at this point, especially to, as we say, flatten the curve in India, because like we discussed, children are not able to wear masks, wash hands, do the hand sanitizers, not touch their face. So unfortunately, and it's very tragic actually, but social distancing is very important for the pediatric population until cases go down more. In addition to that, avoiding indoor settings, I think, becomes very important also for children, where they can engage in some outdoor play, but indoor settings, again, the risk of transmission is significantly higher. And when possible, all the precautions that we recommend for adults should be implemented, like mask wearing, hand washing, social distancing. Thank you so much, Dr. Sharon. Dr. Shweta, you were to add, and if you could in Hindi, that will complement what Dr. Sharon also said. हाँ, जैसे डॉक्टर शैरन कह रही थी, वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है ये पैंडेमिक को, हम सबको पूरे वर्ल्ड में पैंडेमिक से निकलने के लिए। और जब 18 से यंग को जब भी वैक्सीन मिल सकता है, तब वो लोग भी जितना जल्दी वैक्सीनेशन कर सकते हैं। अब बच्चों की बात आती है, जो वैक्सीनेशन अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है, जो उन बच्चों के लिए, उनके लिए अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब जैसे हम अभी कह रहे थे, और या डॉक्टर श्वेता, आपका साउंड शायद मिस हो रहा है। Okay, doctor, yeah, well, it seems yeah, you're back, Dr. Shweta. Sorry, I think हाँ, मेरा इंटरनेट शायद कट हुआ था। हाँ, मैं ये कह रही थी, जब बच्चों की बात आती है, अभी तक यही इम्पोर्टेंट है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, ग्रुप्स में ज़्यादा ना मिले, घर के अंदर ज़्यादा ना मिले, बाहर थोड़ा खेल सकते हैं, पर वो भी डिस्टेंस, और जितना मास्क पहन सकते हैं, 2 साल से ज़्यादा बच्चे मास्क पहने, और हैंड वॉशिंग, वो सब अभी तक इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। माधव जी, यस, आप अनम्यूट करके प्लीज, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछिए प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं कि आजकल कोविड-19 का दौर जो चला है, इसमें मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि वायरस हवा में है। इसलिए बार-बार हाथ धोने के लिए नहीं बोल सकते हम, सैनिटाइजेशन के लिए नहीं बोल सकते, मास्क ही हमें बचा सकता है। पहला क्वेश्चन, मास्क कौन सा वाला पहनना चाहिए? क्योंकि आजकल कपड़े वाले मास्क आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वो कपड़े में ही रह रहा है, और उसके बाद आप दोबारा उसे इनहेल कर ले रहे हैं, और ये प्रक्रिया बार-बार हो रही है। दूसरी चीज, जो बच्चों में आपने एक क्वेश्चन एक बार में ना आसान रहेगा ट्रांसलेट करने में। थैंक यू। His question is about masks. He's saying that what kind of mask should we wear? And because, like people wear cotton masks, and when you kind of breathe out, CO2 remains and all, etc.
तो इसमें क्विक आंसर, व्हाट काइंड ऑफ मास्क आप सजेस्ट? Dr. Samar, you can. Yeah, so surgical, yeah. So that's a good Surgical question. Surgical masks are superior definitely to cloth masks, and it has to do with the thickness and the fiber count of the mask, essentially, in preventing the virus particles to enter your nose. So cloth masks, sometimes they're homemade, they're made by various companies, but we know with surgical masks, it's exactly what type of protection you're getting. So when possible, use a surgical mask. If not, even the cloth mask can be beneficial. The important thing about masking is just to make a seal that is as tight as possible. So that can mean twisting the strings of the mask to make it tightly fit over the nose and the mouth. Double masking has gained a lot of popularity, but we're not totally sure if it's actually beneficial. It has to do with the layering and the thickness. So again, double masking is reasonable. Twisting the mask string is important. So what's sometimes more important than the actual type of mask is the tight seal, because you can wear a surgical mask and have it be below the nose or be ill-fitting, and that's not going to offer you the protection. थैंक यू। डॉक्टर शरण का कहना है कि जो मास्क पहने वो सर्जिकल मास्क पहने और इंश्योर करें कि वो टाइट पूरा बंद है, क्योंकि अगर वो लूज है तो फायदा नहीं। तो बेसिकली सर्जिकल मास्क अगर आपका उत्तर होता है। और दूसरी बात, डबल मास्क मानने का शायद फायदा है, पर वो भी प्रोवन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मास्क आपका पूरा सील्ड हो। Thank you, Madhav Joshi ji. Kalpana, would you have some question from our question bank? I know we've not gone through them quickly. Shweta wants to say something. Shweta, Dr. Shweta wants to वो say मास्क के बारे में पूछ रहे थे, तो मिस्टर अक्षत बदानी ने पूछा है कि हाउ ऑफन डू वी नीड टू चेंज सर्जिकल मास्क, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी से मास्क बदलना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो मास्क तभी बदला जाता है जब वो वेट हो, या आपने उसमें छींका हो, या वो उसमें कोई छेद या ऐसा कुछ हुआ हो जो आपको प्रोटेक्ट ना कर सके। I think that's a great point from what I could understand. Yeah. Thank you so much. Kalpana, before we dig in, there's a kind of a technical question, if I can get an answer. थोड़ा सा एक तकनीकी सा question है. The question is, why are we not using monoclonal antibodies instead of a live or attenuated vaccine, as these antibodies have high performance rate? I don't know if the question is what, I don't know medicine, but if the question makes sense to you, can you please answer it? That why are we not using monoclonal antibodies instead of a live or attenuated vaccine? Samar, would you? Okay. I mean, I can. Yeah, maybe I can take it. Just because this is not only about children, it's also about adults. So it's important to understand that people are trying many different treatments for COVID. And of course, everybody has their favorite treatment that they want to use. But please understand that monoclonal antibodies and vaccines have two very, very different roles. Monoclonal antibodies, in certain mild cases, may help to decrease the infection, although that's still not clear. And one of them was removed recently from US use. Does someone want to just translate that for me, for monoclonals? इसमें तो I think I will request Dr. Pandey. Dr. Pandey ji, please, अगर डॉक्टर समर का कहना है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और वैक्सीन दोनों अलग अलग चीजें हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का रोल जो होता है जब हल्का इन्फेक्शन होता है तब उसमें कभी है, अभी वो रिकमेंडेड नहीं है, और वैक्सीन और उनका कोई आपस में कंपैरिजन नहीं है। इसलिए exactly, thank you Dr. Pandey. इसलिए the point is, monoclonal antibody may work, may not work in some, but vaccine teaches your body to make its own antibodies. And that is a very different thing, and that immunity can last for months or hopefully even longer than that. So vaccines and monoclonal don't even belong in the same sentence. Thank you. Dr. Pandey उसे कंप्लीट कर देंगे इस पॉइंट को जो थैंक यू सो मच सर। मर कह रहे हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वही बात है कि और वैक्सीन अलग चीज है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इलाज के टाइम में दी जाएंगी और
वैक्सीन एक ऐसी चीज है जिससे बॉडी में एंटीबॉडी पैदा होती हैं और वही महीने और साल भर और आगे जैसे पता चलेगा, जैसे जैसे समय गुजरेगा पता चलेगा कितने समय तक इफेक्टिव रहती हैं। वैक्सीन ही एक तरीका है, उनको दोनों में कोई तुलना नहीं। Beautiful, sir. Thank you so much. Very neatly captured. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पांडे जी, आपका आपके बिना हम अधूरे थे सर. Thank you very much. Now कल्पना डॉक्टर मनकोटी मिस मनकोटी जी कोई प्रश्न है आपके? प्लीज बोलिए. हाँ सर, एक सवाल आया है मिस्टर अमित पपोला से कि थर्ड वेव में आप कैसे कह सकते हैं और क्यों कि चिल्ड्रन ही अफेक्टेड होंगे? Why only the children will be affected in the third wave? Why and how? So the question I is think from I think that's been one of the messaging aspects that has not been accurately done necessarily. So I hear this a lot, that the children will be affected in the third wave, and yes, that is a possibility, but we still need to have our focus be on vaccinating and having hospital preparedness for the elderly and those with and other adults who have comorbidities. So yes, there is a potential for having the third wave affect children, but as I mentioned, the majority of children have asymptomatic or mild infection. The multi-system inflammatory syndrome that affects children will affect a very small percent of children. So again, I think the priority should be on protecting the elderly and the other adult age groups that have underlying conditions. Thank you so much, Dr. Sharon. May I request Dr. Shweta, please to add on, and because what you add on, and you'll be able to assimilate what Dr. Sharon said also, right? In Hindi, that will effectively get our messaging out to this question. तो डॉक्टर श्वेता आप आंसर करेंगी मनकोटी साहब का जो प्रश्न था कि ये कैसे कहा जा सकता है कि थर्ड वेव जो आ रही है इसमें बच्चों को ही ज्यादा टारगेट होगा, ये कैसे स्पेकुलेशन है? डॉक्टर श्वेता, आपके विचार प्लीज. हाँ ज़रूर। जैसे डॉक्टर शैरन कह रही थी, हम ये ज़रूर नहीं कह सकते कि बच्चों को ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, और वैसे भी बच्चों में जब भी कोविड इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादातर उनके सिम्टम्स इतने सीरियस नहीं होते हैं या इतने अफेक्टेड नहीं होते जैसे अडल्ट्स अफेक्ट होते हैं। पर ये भी है कि वैक्सीनेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि अडल्ट ज़्यादा वैक्सीनेट होंगे तो शायद बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्शन होने की शंका है, पर ये ज़रूरत नहीं कि ज़रूर होगा। Thank you so much, Dr. Shweta. बहुत धन्यवाद. Yeah, please, Dr. Sharon. There's always a concern as variants arise that could we potentially have a variant that affects the pediatric population more. And I want to reassure everyone in India that thus far there has not been a variant that has really been very aggressive towards children. So when we have variants, they're known to be more infectious, most transmittable, but again, not necessarily thus far. That could change. There has not been a variant that has been very more aggressive in the pediatric population. Great point. Thank you so much, Dr. Sharon. जो डॉक्टर शैरन कहना चाहती है ये बात है कि हमेशा कोविड के अलग वेरिएंट्स की डर रहता है कि शायद एक वेरिएंट ऐसा आ जाए जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को ज़्यादा अफेक्ट करे, पर अभी तक जो भी वेरिएंट्स है वो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। वो बदल सकता है, पर अभी तक जो हमने देखा है उसमें ऐसा कोई भी वेरिएंट नहीं है जो ज़्यादा पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। Thank you so much, Dr. Shweta. Yes, Kalpana ji, please. There is a question from Hemchandra Pandey. He says, he was asked if a person has an allergy to penicillin, can that person, he or she, take the vaccination? Yes, definitely. ज़रूर ले सकते हैं क्योंकि जो पेनिसिलिन का एलर्जी है वो अलग है, और वैक्सीन से उसका कोई लेना देना नहीं है। So I would like to follow up that question with a question. The appropriate question to be asked is what type of allergy
does that person have? And if it is a severe allergy, which is called anaphylaxis, where you have trouble breathing, swelling of the lips, the eyelids, and other like diarrhea, difficulty breathing, things like that, that does become a serious allergic reaction that needs to be noted when you go for vaccination. And the reason that's important is because it would be preferred that you get the vaccine at a healthcare facility where if you were to have a serious adverse reaction from the vaccine, it could be treated. And also it would be recommended for you to be observed for allergic reactions for a period of half an hour, 15 to half an hour after receiving the vaccine. But it is absolutely recommended that you still get the vaccine, even with a serious allergic reaction to penicillin. Thank you so much, Dr. Sharon. Kalpana ji, before we move on, Dr. Pandey, आप क्या suggest करेंगे? यही जो question जो कल्पना जी ने पूछा, जो जिस सज्जन का था, पांडे ने पूछा, हाँ, तो आप भी वही आपका विचार शेयर कीजिए। शेरन जी ने बताया कि पेनिसिलिन की एलर्जी हो, किसी चीज की भी एलर्जी हो, एलर्जी वालों को अगर कोई सीवियर एलर्जी पहले से है और एलर्जी के कोई लक्षण पहले से आए हुए हैं और उनको वैक्सीन लेना है, वैक्सीन तो लेना ही होगा, लेकिन डॉक्टर को बताना है, हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाना है, वहां जाके सब बताना है, तब वैक्सीन ली जाएगी। तब वहीं पे हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर ही जाके अगर 10-15 मिनट 15 मिनट से आधा घंटा तक इंतजार करें कि कोई चीज, कोई और परेशानी तो नहीं हो रही है। तो पेनिसिलिन किसी को एलर्जी है, एलर्जी के बारे में जरूर अपने डॉक्टर को बताएं। Thank you so much, Dr. Pandey. I think Dr. Samar, you want to say something? Yeah, thank you both. Just to add, someone just added another sentence saying, can we give another question saying, can we give vaccine to a person suffering from diabetes? And I think what I would say is, just to agree with what the doctors just said, that yes, absolutely, people with diabetes are higher risk for COVID. There are very few reasons, very, very few reasons not to take the vaccine. If you have any conditions like an anaphylaxis, like a serious allergy reaction, tell your doctor so they can watch you, but it's almost in every case, it's better to get the vaccine than avoid it because of fear of complications. Thank you so much, Dr. Samar. I think the point you said, the question was, if somebody with diabetes can have a vaccine, your short answer is yes, right? Yes. तो जो प्रश्न था उसका आंसर बिल्कुल यस है, डायबिटीज हो आपको बिल्कुल वैक्सीन से झिझकना नहीं चाहिए, वो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। बिफोर आई कम टू कल्पना जी, मैं रिक्वेस्ट डॉक्टर विद्या कर्नाटक, विद्या जी, यू हैड सम क्वेश्चंस, आपके तो बहुत सारे प्रश्न और आप बहुत ज्यादा डील करती हैं, आप हमें ग्राउंड से जुड़ी रिपोर्ट और प्रश्न पूछिए। Dr. Vidya, she is engaged very much with the grassroots children in the schools, So I'm requesting her some questions that would have come to her from the teachers and parents and all. Vidya ji, please. One question from Nivedita Barthwal. Why is vitamin D3 important for COVID in children? Kindly tell the dose for kids. किस तरीके से विटामिन डी महत्वपूर्ण है और बच्चों को कितनी डोज दी जा सकती है? Thank you so much. The question is regarding vitamin D and how much of the dose can be given to children, right, Dr. Vidya? To children who have COVID. Who have COVID? Yeah. Oh, no. This for COVID in children. मतलब अगर COVID से बचने के लिए. So general question, D3 important for this COVID. This is a general question. COVID. Children, yes. COVID or in general to prevent, let's say, COVID amongst children, vitamin D, how important it is. I think that's the essence of the question, please. Right, sir. Shweta ji, Dr. Sharon. सब vitamins important है बच्चों की ग्रोथ के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं है कि विटामिन D3 स्पेसिफिकली कोविड के लिए कुछ कर सकता है, जो मुझे पता है। डॉक्टर शैरन मुझे करेक्ट कर सकती है। Sharon, I'm just saying, I don't think vitamin D3 is specifically helpful for COVID, but any vitamins and all vitamins are important for growing children.
Awesome. So vitamin D becomes important when you have a newborn that's exclusively breastfed. Vitamin D and iron are important because human breast milk is deficient in that. That's number one. Vitamin D becomes important for children in India who have rickets or a vitamin D deficiency. But as Dr. Shweta said, no role in the treatment or prevention of COVID-19 in children. थैंक यू सो मच डॉक्टर शैरन कह रही हैं कि विटामिन डी उस केस में फायदा हो सकता है जब बच्चा माँ का दूध पी रहा हो, क्योंकि माँ के दूध के अंदर विटामिन डी कम होता है उस सिचुएशन में, नॉर्मल में, राइट। बट अदरवाइज जहां तक कोविड की बात है उसमें विटामिन डी का कोई खास रोल या फायदा एनी, और जैसे डॉक्टर श्वेता भी बता रही थी, सारे विटामिन जरूरी है। डॉक्टर विद्या, कोई और प्रश्न है आपके पास? सम अदर क्वेश्चन यू वुड हैव? सर एक क्वेश्चन और है, माइक के पास आके बोलिए प्लीज। सॉरी सर, मेरा माइक शायद सही काम नहीं कर रहा। सर बिल्कुल ठीक कर रहा है, आप बोलिए। एक मदर का कहना है कि मैं बच्चे को फीड करा रही हूँ, बच्चा दूध पीता है, तो क्या मैं वैक्सीनेशन करवा सकती हूँ? मुझे वैक्सीन लगाए। Question from a mother who is breastfeeding a child. Her question is, can she get a vaccine? हाँ जरूर, एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है वैक्सीनेशन कराने के लिए, क्योंकि उनके दूध से जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो बच्चों को भी जाके प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इम्यूनिटी दे सकते हैं। Great. Thank you so much, Dr. Shweta. We have another question coming from Kush. In fact, she is our resident curator, director, choreographer of the show. Thank you so much, Kush. She wants to know what percentage of pet population affected by COVID ends up with miscellaneous MISC. Dr. Samar, can you understand? Because there's something hidden, deeper miss. Can you please answer this question, or how? No. It's for the pediatricians, but you said it right, Robinderji. It's how often do kids get multi-inflammatory system C, MISC? That's the question. Okay, in that case, maybe we could ask you to Dr. Anil Pandey. Dr. Pandey. For the Indian children, the question is coming from an American doctor, that what percentage of children end up getting MISC in India? पहले तो MISC चिल्ड्रन में बहुत कम होता है, ज्यादातर बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। एग्जैक्ट परसेंटेज का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत कम पॉपुलेशन ऐसी होती है जिनको MISC होता है। और तब वो जब सीवियर डिजीज होती है तो डॉक्टर जो भी सीवियर सिम्टम्स उसके जो भी आपको और लक्षण होते हैं, तब जाके आप MISC में परसेंटेज के बारे में, मुझे अभी इसके बारे में ज्ञान नहीं। Sure. Can you please say it in English also, because the question was coming from a doctor in America. Just short में आप कह दीजिए तो उनको वापस भी मिल जाएगा इसका जवाब। Okay. I don't have any information about the percentage of children involved in this MISC, but usually very few number of cases out of the all children population is affected by the MISC. Mostly children are, as we all understood, that are asymptomatic or mildly symptomatic, and they get well. But then after, you have to keep an eye over the children for another 1 month, 2 months, 3 months, whether they are being affected by MSC. As soon as we get some symptoms, contact the doctor. Thank you so much, Dr. So in the United States, there have been about 11.5 billion pediatric COVID cases. Out of those children, there have been 2,000 MISC cases. So very rare. Out of those 200, 2% of them did die. So very rare. But when it happens, severe morbidity, mortality is associated with it. Awesome. Thank you so much, Dr. Sharon. Okay, now, one of the wonderful jobs I have to do as a moderator is to keep a lookout. I'm going squinty-eyed, is to keep an eye on the clock which is ticking and how much time. So it's been an amazing conversation so far. We are almost 70 minutes into the conversation. So I think maybe in another 5 to 7 minutes, we will wrap up, if that's okay with your permissions of time, the doctor panel, Dr. Samar, Dr. Mehta, Dr. Shweta, Dr. Sharon. Okay, around 10 more minutes. Robin, I want to add something, before we start with the question. I really want to thank Vinita Lakchoda and Gaurav and Adya Singh. Vinita had been, so diligently, she's prepared the questions,
and send it to us. So thank you, Vinita, and thank you, Gaurav and Adya, for providing all, exposure to so a lot of people. Thank you. Oh, absolutely. Gaurav Wadial of City Pithoragar organization doing amazing work in the city. Adya Singh of a Himalayan collective. It's a collective of, multiple non-profits working together. And of course, our other partners also out there. Now, back to you, Mankoti ji has a One question. question, please. There is a question from Mr. Mahesh Parihar from Almora. उन्होंने बोला है कि उनकी हार्ट ओपन सर्जरी हुई थी जुलाई लास्ट ईयर, क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं अब? मिस्टर महेश परियार हैज हार्ट ओपन सर्जरी इन द मंथ ऑफ जुलाई लास्ट ईयर. Can you go for the vaccination now? Yeah, Dr. Samar. I think that's probably an adult question, not a pediatric question. So I can. Yeah, but this is a question. No. So yes, absolutely. Again, it depends on what the heart surgery was. If it was a valve replacement or a bypass, then it should have no effect on the need for vaccination. If it was a transplant or something that affects his immune system, he should discuss with doctor. But again, I think as we've said, very few reasons not to get the vaccination. And anyone who has had a history of heart problems is at higher risk. So please, yes, talk to your doctor, but I think you should get the vaccine, absolutely. मनकोटी साहब, आप जनाब हिंदी में प्लीज साहिब को और ऑडियंसेस के लिए ट्रांसलेट कर देंगे. डॉक्टर समर ने ये बताया है कि हार्ट ओपन सर्जरी के बाद भी वो वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से वो कंसल्ट जरूर कर लें, अपना चेकअप कराते रहें. Isn't it? Yes. Thank you so much. Before we move on, I would like to read a comment. We had a bunch of comments coming, but this is like a little bit of a pep up. Prahlad Adhikari. Yeah, this live interaction with doctors is very much helpful, is helping address confusion due to wrong information on various social media channels like WhatsApp, etc. So thank you folks, right away, instant, feedback on some things which we can see. Madhav ji, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? बिल्कुल, जैसे कि सभी मेरे को पूछ रहे हैं व्हाट्सएप में कि ये जो वैक्सीन है ये कहाँ तक कारगर है और कितने साल तक चलेगी, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वैक्सीन कहाँ तक कारगर, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि बच्चों को जो कि कहाँ तक कितने साल तक ये कोविड चलेगा, कोविड कितने साल तक चलेगा. और तीसरी चीज ये है कि जैसे हम पेंटा 5 लगाते थे बच्चों में, तो अब क्या हमें पेंटा 6 लगाना पड़ेगा उसमें कोरोना वैक्सीन डाल के? 2 क्वेश्चन. Dr. Pandey ji, can you convey that in English, please, what Madhav bhai is asking? Please, for the question for our Americans, Dr. Pandey, if you can help. माधव भाई एक बार और बताएंगे, शॉर्ट में बताएं जरा आपका क्या क्वेश्चन है. पहला वाला क्या था? शॉर्ट में बताएं. पहला क्वेश्चन क्या था माधव? पहला क्वेश्चन था कि कब तक वैक्सीन इफेक्टिव रहेगा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कितने साल तक इफेक्टिव रहेगा, और इनका दूसरा क्वेश्चन था कि कोविड कब तक चलेगा. बच्चों में आपने बेड़ा उठाया. डॉक्टर श्वेता, आप आंसर कीजिए प्लीज. तो अभी जो भी हम देख रहे हैं कि पता नहीं है कि कोविड वैक्सीन कब तक इफेक्टिव रह सकता है. शायद 3 से 6 महीने तो जरूर इफेक्टिव रहेगा, अभी सालों तक रहेगा पता नहीं. जैसे फ्लू का वैक्सीन हम हर साल लेते हैं, शायद कोविड वैक्सीन भी वैसा लेना पड़ेगा फ्यूचर में जाके, पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, क्योंकि हमने वैक्सीनेशन बस अभी दिसंबर के एंड से शुरू किया है. तो 6 महीने का इंफॉर्मेशन है हमारे पास. और वो कह के दूसरी बात ये है, कोविड कब तक चलेगा? जब तक पूरा संसार वैक्सीनेट होके और इसके इफेक्ट्स कम हो और ये स्ट्रेन ज्यादा म्यूटेट ना हो. अब वो कब तक चलेगा किसी को भी पता नहीं है. जो बस 1 साल में हमने जितना भी
एडवांसमेंट किए हैं वैक्सीनेशन बनाने में या थोड़ा वर्ल्ड को ओपन करने में, ट्रैवल करने के लिए या बाहर जाके किसी से मिलने के लिए, वो अच्छी बात है। पर हम जितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे उतना जल्दी कोविड का वेव कम हो सकता है। Thank you. Very, very good. वो तो प्रूवन है। Yeah. And now, we are towards the closing rounds and laps. But Kalpana ji, you would have maybe को some कुछ more. कहना है, डॉक्टर पांडे को कुछ कहना है। डॉक्टर पांडे को कुछ No, yeah, Dr. Pandey, please. Sorry. हाँ, मेरे को कहना है, इनका सवाल जो है कोविड कब तक चलेगा, ये तो कोई जवाब दे नहीं सकता। पहला पेंडेमिक 100 साल पहले था H1N1 से, और वो आज भी H1N1 है। उसके लिए फ्लू का हम वैक्सीन लेते हैं और वो वहीं पर है। तो वैक्सीनेशन, टीकाकरण ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, उसी को फॉलो करें। और ये वायरस जाता कहीं नहीं है, रहेगा हमारे साथ ही। थैंक यू। Sure. Thank you so much, Dr. Pandey. Kalpana ji, moving towards the closing rounds, please pick up a few more, one or two more quick rapid fire kind of questions. Let's do that. A few people have asked something relating to mental health. Can you be able to answer the question? If so, then I'll ask those questions. I think we could keep that aside, Kalpana, if possible. Mental health. Okay. The other in that list that you had. Yes, there is one more way I want to add. They are asking, what are the side effects of COVID in children? Mr. One sec. Who asked? ये प्रश्न था कि कोविड के क्या साइड इफेक्ट्स हैं अगर COVID बच्चे में होगा? In children, Ved Prakash, Mr. Ved Prakash. Okay, Dr. Samar. Yes. No. Just Kalpana ji, just to clarify, Prakash ji's question I think is on not side effects but after effects. So what we in medical we call, no, that's okay. We call it post-COVID. Post-COVID. Okay, Dr. Shweta, Dr. Sharon. Yeah, please, Dr. Sharon. Yeah, that's a very interesting question. And unfortunately, we don't know the answer to that. Children haven't been described to have the long COVID symptoms adults do, but as we have more pediatric cases, even internationally, we will gain more information. Short answer जो प्रश्न था कि कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे बच्चों में, तो डॉक्टर शैरन का कहना ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है। अभी हमारे पास कोई इसका रिसर्च और कोई हमारे पास इसका आइडिया नहीं है फिलहाल। अभी आगे जाके इस पे रिसर्च शोध होगी। दैट इज राइट। आई मीन वी डोंट हैव अ आंसर टू इट येट, विल बी सीन एज द केसेस डेवलप, राइट डॉक्टर शैरन, डॉक्टर समर? ग्रेट, थैंक यू सो मच। कल्पना जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। किसका? Or we are done. Oh, that'd be awesome. What precautions? I think Anjana Pandey had asked a question. I think we have answered that. Doctors have answered it. What precaution can we take at home to prevent children from the COVID third wave? Yeah, that's been covered. I think we have done it. We have done that. Mr. Mankoti ji has a question. I think Mankoti ji, आपका प्रश्न है? हाँ, एक नेहा राउत ने एक सवाल पूछा है, excessive use of steaming and zinc can cause the side effect. वो हो गया। जिंक और स्टीमिंग, स्टीमिंग रिसर्च के हिसाब से कोविड के लिए कोई फायदा नहीं है, परंतु अगर आप करना चाहते हैं करिए, बस नियंत्रित मात्रा में। बस एक और क्वेश्चन था जो मुझे एड्रेस करना था। किसी ने पूछा है कि बच्चों में आइवरमेक्टिन यूज कर सकते हैं या नहीं। Sharon, just for you, I think you're the best person to answer. Should children use ivermectin? Yes. So good question, pertinent question. Ivermectin is basically an antiparasitic that has been used for some time, even in pediatric parasitic infections. So we know that it can be safely used, but does it actually provide a benefit in terms of preventing or treatment COVID-19? We do not know yet. There have been several observational studies that have been done in Bangladesh and other Southeast Asian countries, and they were small, they were underpowered, they were observational studies. So right now the jury's still out on ivermectin. We need a large randomized control study which looks at it in both adults and pediatrics before we can comment on that. Who will? Dr. Shweta. Yeah, Dr. Shweta, maybe you yourself can translate that.
हाँ जरूर। तो डॉक्टर शैरन ये कहना चाहती है कि आइवरमेक्टिन चिल्ड्रन में रेगुलर जो हम राउंड वर्म ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं और वो सेफ है, पर कोविड में इफेक्टिव है ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है। थोड़े स्टडीज है जो बांग्लादेश है या अलग देशों से देखा है कि शायद इफेक्टिव है, पर अच्छा रिसर्च जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स कहते हैं हम, जो रिसर्च में इफेक्टिव कहते हैं, वो किया नहीं है। तो आइवरमेक्टिन अब तक जो हमें पता है कोविड के लिए इफेक्टिव नहीं है। Thank you so much. Also, in the studies, they looked at ivermectin and doxycycline, and we know that doxycycline is contraindicated in children less than 8 years of age because of teeth staining. So, again, something to avoid. Sure. Thank you so much. I think now, Kalpana, we are probably done with the questions. We have many more in the bank and many more coming in the side chat. But I think it's been an amazing conversation and a wonderful time. अभी हमारे पास और भी प्रश्न आ रहे हैं, परंतु देखिए टाइम की किल्लत है, तो अभी हम बस अगले 2-3 मिनट में प्रोग्राम खत्म करेंगे। परंतु आप अपने प्रश्न जिन को अगर आपने भेजे थे, आपके पास फॉलो अप क्वेश्चंस आप भेजिए। I'm saying to the audience, if you have follow-up questions, please send it to us. We'll pass it on to you guys, and the next few days or sometime we can get some at least basic replies to those questions, because there are a bunch of other questions still coming in. That being said, Kalpana ji, आप क्या कहना चाहेंगी कुछ before we start winding up? Of course, we have to thank all our participants, but still before that, there was this one lady, assistant professor, Dr. Ruchi. She wanted to ask something about a kid. So has she joined it? No, she did not. In fact, she did not. She had a she was very supposed to be a panelist also from. I was. She had a. She wanted to ask a question, so I was just waiting for her. I've told her to join, but I don't think she's joined. But and there is, if you there is one more question about, it's a journal. It's not for kids. They said whether in the other day also they asked the same question, whether we can have the second dose can be taken of some other. Like if we have taken Covishield, so we can take Covaxin. That this one people have been asking this question, and he says, and they're asking for comments for children below 18. Would you recommend vaccination? These two have been, I think, partly have been answered, but this about the two, whether we can take one dose. Maybe Dr. Summer can give a quick answer to that. Kalpana, your question. Yeah. So just a very quick answer. I think we said in the last session that we're studying, abhi study kar raha hai, magar we don't, so what we know is, we know that it is very likely safe to mix and match. We don't know yet if it is more or less effective, but we are hoping it actually will be more effective. Isliye, right now, the best answer is take whichever vaccine you can get. And if necessary, if you must mix and match, we think that's probably safe to do. More information will be coming soon. Thank you so much, Doctor. Dr. Samar का आंसर है कि इस समय अगर आपको वैक्सीन्स को मिक्स करना है, अगर हो नहीं रहा है तो मिक्स कर लीजिए, क्योंकि अभी तक जो रिसर्च है उसके हिसाब से ये है कि कितनी इफेक्टिव होंगी दो ऐसा कॉम्बिनेशन, उसका भी पता नहीं, पर फिर भी कुछ तो फायदा होगा, राइट डॉक्टर समर? सो टू जनरली, बट ऑफ कोर्स अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी कदम उठाइए, क्योंकि ये जो पैनल में डिस्कशन है ये एक एडवाइजरी कॉन्वर्सेशन है। ये आप समझिए कि जैसे हम घर पे बैठे हुए एक घर के कमरे में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के गपशप मार रहे हैं आपस में। ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, ये जनरल एडवाइस है एज अ फैमिली के रूप से। What I'm saying is that these discussions are like a family conversation, and anything they do has to be taken with under guidance of their appropriate medical doctors, right, Dr. Pandey? है ना sir? And before we end, I would like the doctors here, if they could just sum up what are the precautions, what are the precautions we should take, especially for the children, so we can prevent, this COVID third wave, not to affect our children much. What we can do? Can you just sum up, Dr. Shweta and Dr. Sharon? That will be so good. जरूर। मैं तो ये कहूँगी कि 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। सब अडल्ट जिनको भी वैक्सीनेट कर सकते हैं, वैक्सीनेट करा ले, जितनी जल्दी वैक्सीनेट कर सकते हैं।
और सब अभी तक, क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा केसेस अभी तक चल रहे हैं, जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग करे, जितना हो सके हाथ हैंड वॉशिंग और वो जो मास्क पहनना वो सब करे जितना भी हो सके। और बच्चों को भी जितना मास्क पहना सकते हैं 2 साल से ज़्यादा बच्चों को, और जितना उनको भी सबसे दूर रख सकते हैं उतना जल्दी शायद ये वेव कम हो सकता है या इतना अफेक्ट नहीं कर सकता है। And if you are, if you have a newborn or if you have an infant, please breastfeed that child. डॉक्टर श्वेता को तो आपने सुन लिया प्रिकॉशंस में। डॉक्टर शैरन कह रही हैं, जो प्रश्न था कि क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं, डॉक्टर शैरन का आंसर ये है कि अगर आपका बच्चा जो आप माँ अपना दूध पिलाती है तो उसको केवल माँ का दूध ही पिलाएं डेफिनेटली, राइट डॉक्टर शैरन? मदर्स मिल्क। डॉक्टर समर, एनी quick bullet point precaution, mask, etc.? No, I think Dr. Shweta and Dr. Sharon did a wonderful job. I just wanted to say thank you to Rupinder ji and Kalpana ji, and really especially to Mankoti ji, Dr. Vidya, Dr. Pandey, Madhav ji. Really, you guys are the ones on ground in this second wave, and you're the ones who are helping your community and your patients. And we really, because we can't be there to help in person, we really namaste and really shukriya, bahut bahut dhanyawad for everything you're doing. डॉक्टर समर कह रहे हैं कि बाकी तो है, मैं सबसे ज्यादा अपना धन्यवाद देना चाहता हूं श्री मनकोटी जी को, डॉक्टर अनिल पांडे जी को, डॉक्टर विद्या कर्नाटक जी को, माधव जोशी जी को, और जो भी बाकी लोग हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, इन मामलों से जूझ रहे हैं। क्योंकि हम तो वहां दूर रहते हैं, पर हमारा प्रयास है कि हम किसी तरह से थोड़ा बहुत भी अगर कुछ अपना श्रम दान कर सकें, जिससे कि कुछ कहीं अवेयरनेस या नॉलेज का हम एक्सचेंज कर सके। तो इसलिए हम बहुत आभारी हैं कि हमें भी ये मौका मिला अपनी सेवा देने का, और और आप जो काम कर रहे हैं, आपकी सेवा और आपके कार्य को हम उसको भी हम सैल्यूट करते हैं। डॉक्टर समर बॉस्टन से का कहना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर समर। डॉक्टर शैरन, वुड यू हैव एनी क्लोजिंग रिमार्क्स बिफोर वी स्टार्ट थैंकिंग यू गाइस? Thank you for giving me this opportunity. I've enjoyed it, and I hope we've cleared up people's questions. थैंक यू सो मच। डॉक्टर शैरन कह रही है कि मुझे अपॉर्चुनिटी का मतलब मैं आभारी हूं, और मैं होप करती हूं कि आपके जो प्रश्न आए उनको कुछ को हमने क्लैरिफाई करा, और आपको कुछ कुछ मैसेजिंग, आपको कुछ कंफर्ट मिला एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। थैंक यू सो मच डॉक्टर शैरन। मैं नाउ इनवाइट डॉक्टर श्वेता, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स बिफोर वी स्टार्ट थैंकिंग यू गाइस एंड क्लोजिंग द सेशन। मेरा भी जो डॉक्टर समर और डॉक्टर शैरन ने कहा है, आप लोग जो वहाँ पे है और इतना काम कर रहे हैं, ये सब जो आप लाइव में देख रहे और कर रहे, उतना तो हम नहीं कर सकते, पर जो भी हम यहाँ से कर सकते करने की कोशिश करेंगे। तो आप सबकी ज्यादा धन्यवाद है, और थैंक यू मुझे ये पैनल में आने के लिए इनवाइट किया। थैंक यू। Thank you so much, Dr. Shweta. Now, on our behalf of the organizers, we would firstly, of course, everyone to be thanked, but also especially Dr. Pandey जी, क्योंकि मैं डॉक्टर पांडे जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि हमारा टॉपिक था बच्चों को लेके कोविड, तो प्रैक्टिकल एडवाइस तो ये दे रहे हैं, प्रैक्टिकल जो भी जितना हो सक रहा है इस समय डॉक्टर पांडे और डॉक्टर पांडे जैसे डॉक्टर्स जो कि हमें इस आपदा से निकालेंगे। So I'm thanking Dr. Anil Pandey for being with us and doing the job that he's doing. Nalin Pandey. Sorry? Dr. Nalin Pandey. Of course, Dr. Nalin He's not Pandey, yes. Anil Pandey. Nalin Pandey. Sure. But especially, really, we are very thankful to him. In spite of the last minute request, he accepted our request and really did wonderful for us, making this so great. Thank you so much. And Kalpana ji, would you like to propose a vote of thanks to Mankoti ji, Dr. Vidya Karnatak, Madhav Joshi, and a legion of people that worked with you? If you we are just a part of the team. Thank you everybody. And माधव जी, आपके जो उत्तरकाशी के लोग, जिस माधव जी बहुत उत्तरकाशी में एकदम जमीन से जुड़े हैं और बहुत काम कर रहे हैं, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का, लोगों को खाना बांटने का काफी काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को उत्तरकाशी के जितने लोगों से आप जुड़े हुए हैं और जो सुन रहे हैं, उनका खास धन्यवाद।
इसीलिए हमने रखा था कि आपके उत्तरकाशी जो इतनी अच्छी कहते हैं ना देवों की नगरी है, हाँ, उसको भी हम उसके बारे में भी हम सब लोगों को बता सकें. थैंक यू एवरीबडी एंड स्पेशली द डॉक्टर्स, डॉक्टर समर, डॉक्टर शारन, डॉक्टर श्वेता एंड डॉक्टर नलिन मनकोटी जी एंड Robinder Sachdev ji. Thank you everybody. And Dr. Vidya Karnatak, and you know the way she went out of the way to tell everybody कि सबको बोला उन्होंने अपने जो schools में कि भाई आप attend करिए, आपको फायदा होगा. So thank you Vidya ji. Thank you. Thank you so much. मैं अमेरिकन डॉक्टर्स मैं एक्सक्यूज मी मैं अमेरिकन इंडियन डॉक्टर्स के बारे में केवल 2 शब्द बोलना चाहूंगा. I would like to just say few words about the American Indian doctors. कि दिल है हिंदुस्तान में. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. On that note, thank you so much. On that note, this broadcast, I mean, we are once again thankful to everyone, our colleagues, and many people associated to make this happen. Please keep your questions coming, and we look forward to. Actually, by the way, there's a town hall happening tomorrow again with adult COVID for adults. तो जो आज देख रहे हैं, कल एक और प्रोग्राम है, कल शाम को 7:30 बजे ही, जो कि अडल्ट्स को लेके, आज तो बच्चों को था, कल अडल्ट्स को लेके कोविड का होगा. उसके लिंक आपको भेजे जाएंगे, तो डेफिनेटली जुड़िएगा. That said, once again, thanks to everyone for joining in today. बहुत शुक्रिया सबका आज मिलने के लिए. जैसे आपने देखा, हम प्रयास कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन फ्लो आपस में हो. आपके जितने ज्यादा प्रश्न आते हैं, उतने ज्यादा हम प्रयास करते हैं कि वहां से आपको आंसर मिले. That said, this broadcast ends now. Thank you everyone.